खजाना प्रभु यीशुओ कहो का तुम्हें पोता हारू स्वर्गीय खजाना एकठा करा जे जगाम कीड़े न काटथी नाश ना वेता अन ज्या चोर आवीन चोरी ना जाता ज्या तुमा खजाना हाय ते जगाम तुमा चित बिरे मा पावस न बोईस्या तुमा जीवना खजाना कहाँ हाय आवा वसावी भाषाम कार्यक्रम उनाजी जीवना खजाना। स्वगोठे माने जाया बजा जीवन गोठे उनाये कार्यक्रम पहला उनाया भारी हारो एक गीत दुनिया तारण जीवतो उठ्यो ईसु तारी रियो रे लोल जीवतो उठ्यो ने हर गाम गोयो ईसु तारी रियो रे लोल वाटे ईसु देखावे ईसु तारी रियो रे लोल पवित्र जीवन ईसु आपे ईसु तारी रियो रे लोल वाटो आपू बधे जाजी ईसु तारी रियो रे लोल हरोज आपू ईसु नाम ने जी ईसु तारी आखू दी काम कईन थाके वे छता तमी देवा वचने उनाना आलेवे माय तम्हान प्रभु यीशुआ नाम में आय वसावी कार्यक्रम में आवकारता सलाम पाठवो। तो चाला आजरा कार्यक्रम में आगल वधता पेला परमेश्वर आपो सहाय मागजी। ओ आमा जुगीवे ना परमेहेर बा तू यू सुंदर जीवन आय धरते पो आमा नाप्यो आजो आमी आय जगत में रखूड़ तो केटा गाऊना हाय आमा पो दया क त वचने हमजुना तू आमान त उपरो ज्ञान ने डाहपण आप का जेथी आमी तो वाड़ाम हमेशा माटो रेची आय टूकी ने नम्र विनंती पवित्र ने न्यायी प्रभु यीशु तो नामी मागते आमेन। मां पावोश ने बैश्या आजरो वसावी कार्यक्रमा मुख्य मुद्दा ओ आहायका परमेश्वरा अस्तित्व आहायका केव आजो जगत में हिंडे पण व्यक्त्या हा जूथ आहायका जी परमेश्वरा अस्तित्व छेज ना एव विचार सरणी धरावते सामान्य माहू जे वस्तुआन पाली हेकतो ना ने वस्तुआन एटक्या सिवाय अनुभव का हेती खात्री कई हेकतो ना ती माननु तिया माटो घणो ज मुश्केल बाबत आहाय आया थी उलटो परमेश्वर आहाय ए व्यक्त्या सवाला उकेल पवित्र शास्त्र बाइबला सौथी प्रथम उत्पत्ति पुस्तक पहलो अध्याय पहली कलम थी मिली है के जे कलम माय वाँचो ती तमे ध्यान थी उना जा
આદિએ દેવો જુગ ને ધરતી બનાવી. પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલ પરમેશ્વરા અસ્તિત્વ આહાય એ બાબત સાબિત કહે ને એ બાબતો હાથ સાબિત્યા આહાય એ આપું આજો પાલહો. પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલ ચોખ્ખો ને ચટ સ્પષ્ટ જાવે કા મૂર્ખ વ્યક્તિ પરમેહરા અસ્તિત્વ નકાર કહે. ગીત શાસ્ત્ર પુસ્તકની 14મો અધ્યાય ને 1 કલમ પરમાણો મૂર્ખો પોતા મનમી માન્યો કા પરમેશ્વર આયોજના. આપો દૈનિક જીવન में प्रार्थना द्वारो जे संगत परमेश्वरा आरी वेहे ते परमेश्वरा हयाते विश्व पवित्र शास्त्र बाइबल वगरी सौथी श्रेष्ठ साबिती हाय. मां पावोश ने बैस्या परमेश्वरा अस्तित्व आहाय ई माय जाओ केव का मां प्रार्थना बीछो उनाई नीवे छता परमेश्वर उना है ने तिया जवाब आपे. तो चाला आफू परमेश्वरा अस्तित्व आहाय ए संबंधी विगतवार एक पछी एक साबिती पालते जाजी. पहली साबिती काय हाय बाइबल. गीत शास्त्र 19मो अध्याय ने 1 कलम काय कहे ती तमी उनाजा. जुग देवा गौरव प्रसिद्ध कहे ने अंतरिक्ष तिया इतो का परमी हेरा आथा काम जावे. जुग तिया महिमा ने सुंदरता जोर थी पुकारे का परमेश्वरा अस्तित्व आहाय. नवो करार में रोम मंडले लखना पत्र में प्रेरित पाउल जावे का सृष्टि परमेश्वरा अनंतकालिक पराक्रम विषय हिकवे. केव का परमेश्वरा अदृश्य गुण तो तिया सनातन पराक्रम ने देवत्व जगत उत्पन्न वियो ताथी हर जुनो वस्तु हा निरीक्षण थी स्पष्ट जावे का जेथी ते बानो काढ़ी है के नी. बीजी साबिती पालजा अंतरात्मा. जो हाची रीतो विचार जीतो नास्तिक महा प्रेरक बुद्धि गाढ़ अविश्वासा लीधो आंधली बननी हाय. अमुक अंध माहे दिहा अस्तित्व शेजना ए विचारते परंतु ते द्वारो दिहा अस्तित्व ने हमेशा दिहा उगनु ने आथुमनु ते सत्यमी कांईज फेर पड़ता ना. प्रामाणिक महा अंतरात्मा झीणा धीमा अवाज एवोज पोकारी का परमेश्वरा अस्तित्व आहायज ने तो आजो जीवता हाय. माहू परमेश्वरा अस्तित्व नकार कहे ए कारण थी नाह का तो तीहान होदी हेकता ना पण मरण हेती व्यक्ति परमेश्वरान जवाबदार आहाय. तिया तीहान बीक लागे. जुगीम उड़तो मीमाना डायवरान नी थेकजी इतो मीमान डायवर वगरो आहाय ईंडो कना एक हास्यास्पद आहाय. तेवी ज रीतो जुगी माफू परमेश्वरान पाली हेकते ना तेथी परमेश्वर सेज ना ईंडो कना का हेती विचारनु मूर्खाया हाय. आपो इमे थी गणो पोता डोया मित्तो का माथा में मगजान ना हालियो छता आफू शरीला पो जो काबू राखी हेकते तेथी मानते का आफो मगज आहाय. तेवी ज रीतो उत्पत्तेन हालता परमेश्वर आहाय एवो आफू मानते. तीजी साबिती व्यवस्थित विश्व. दुनिया अस्तित्व आहाय ते कोई चोक्कस व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा कोई चोक्कस समय अस्तित्व में आलो. कोई पण आधुनिक वीजळीक यंत्र वालो छापकानो कड़ा लेख्या वगर फक्त यंत्र द्वारा पुस्तक अस्तित्व में लेखी है का तो ना. को बांधनार कोई आहाय. चढ़ा उगवनार कोई आहाय ने दुनिया नियंत्रण करनार पर कोई आहाय. जो कोई गड़ियाला दरेक बागान जुदा पाड़ीन पायो थी पोनो साधनाम राखनाम आवे
ને તિયાન 10 લાખ વરે સુધી પાયાન આનું નામ આવે છતાં તે દરેક બાગ આકસ્મિક રીતો એકઠા કહીન ઘડિયાળ બની હેકતી ના. દુનિયા અસ્તિત્વ સવાલા હાચા ઉકેલ ઓ જ છે કા તિયા બનાવનાર કોઈક ચોક્કસ વિચારશીલ આહાય જીયાન આફું પરમેશ્વર તરીકે ઓળખુતે. ચોથી સાબિતી કાર્યકરણા ભાવના સિદ્ધાંત. ઘડિયાળા અસ્તિત્વ આહાય ઈ તો હો જ ના, પણ તિયા પ્રયોજન કરનાર કોઈક આહાય તે એક ખાસ હેતુને બનાવનામ આલી. ઘડિયાળમી મચ્છર પોતા રેના કો બનાવે એ માટે તિયાન પ્રયોજન કરના માલો ના, પણ તિયન બનાવના ફાચોલ પ્રયોજન કરના મુખ્ય ધ્યેય ચોક્કસ સમય દેખાવે. આય દુનિયા તેવો જ તિહમુરિયા હાન્યા ને મટ્યા દરેક વસ્તુ હા નિરીક્ષણ જ આવે કા દરેક વસ્તુ જીવના ખાસ હેતુ માટે કોઈક બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિઓ બનાવી. તે સર્વશ્રેષ્ઠ આયોજન કરનાર વ્યક્તિયા આયોજના પરિણામ હાય. પાંચમી સાબિતી મહાવિકાસા. મહાનૈતિક ને બુદ્ધિગમ્ય પ્રકૃતિ જ આવે કા તિયાન બનાવનાર ફક્ત સૂક્ષ્મ કા ચેતનહીન શક્તિ ના, પણ તે જીવન બુદ્ધિશાળી ને નૈતિક વ્યક્તિ હાય. પરમેશ્વર સત્ય સમજુના તમાન વધારે કૃપા આપે. આમેન. કાર્યક્રમ બાબતે વધુ માહિતી મેળવવા માટે આમાં સરનામો હાય જીવના ખજાના, પોસ્ટ બોક્સ નંબર 2036 ફતેહગંજ વડોદરા, પિનકોડ નંબર 390002. વેબસાઇટ હાય radio882.com. ફોન નંબર હાય 9429375628 9429375628. દુનિયા તારણ જીવતો ઉઠ્યો ઈસુ તારી રિયો રે લોલ. જીવતો ઉઠ્યો ને હર ગામ ગયો ઈસુ તારી રિયો રે લોલ. જીવના વાટે ઈસુ દેખાવે ઈસુ તારી રિયો રે લોલ. પવિત્ર જીવન ઈસુ આપે ઈસુ તારી રિયો રે લોલ. વાટો આપુ બધે જાજી ઈસુ તારી રિયો રે લોલ. બધી હરોજ આપું ઈસુ નામને જી